Hello, everybody, and welcome to Founders Exchange. We are the team of Execube Exchange, and we are here to bring forward to you one of the most important skills that you as an entrepreneur would require. Our whole vision to get started with this kind of a podcast series वो ये था कि आपको पता लगे कि एक entrepreneurship journey में क्या challenges आती हैं, क्या roadblocks आती हैं, क्या success parameters होते हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी में entrepreneurship को एक बहुत ही important महत्व दे सकते हो. Having that said, we have Sonal over here, who's the founder of Execube Exchange as well as Execube Cowork. She has the distinction of being a TEDx speaker as well. And I'll ask you, Sonal, to just introduce yourself as well. Hello, everyone. I'm Sonal Sharma. And Priyash, thank you so much for the warm welcome. I initially started my career with Execube Cowork. And since we're talking about entrepreneurship, I actually started my entrepreneur journey at the age of 40. So, I have a late start, and I had a lot of catching up to do. But like they say, there's no age to really start up your entrepreneur journey. So when I opened actually Cowork at the age of 40, I realized that, we were housing a lot of new startups, and we realized that a lot of startups had similar issues. And that's what gave us the idea of launching Exchange. Exchange is not just a platform, it's an ecosystem where people from diverse environments can come together and actually seek help and take their entrepreneur journey forward. With that thought in mind, we also launched the Founder Exchange. And on this podcast, for the first time, we have Mr. Arvind Verma, who has 2 decades of corporate experience behind him. And also, he started off his entrepreneur journey after 2 decades, and he's been super successful. Also, a very, very successful consultant. Mr. Verma, please introduce yourself. Well, thank you so much, Priyash. Thank you so much, Sonal. It's a pleasure to be meeting everybody today. See, my journey after my corporate journey of 20 years, it started because I think I was quite inspired by what was happening in the environment. India needed to grow. I'd lived in China, I'd lived in Malaysia, so many countries. I'd lived in England. And I thought that, the ideas which I, let's say, get from the ecosystem, I should be able to build up on those ideas and create wealth for our society. Our, society, go back by 10 years, our per capita GDP was, let's say, 50% of what it is today. I was very patriotic because my last, stay was in England, and I wanted to come back. And I said, what can I do, for the society at large when I come back to India? So entrepreneurship was, my answer to it. I had seen my own family dabble into entrepreneurship, and for me, it was supposed to be a process which had to be, taking care of certain fundamentals instead of, getting into a roller coaster and not knowing what to do with it. Having said about my journey a little bit, I would want to say that, the Founder Exchange, which is our idea, is a fantastic contribution to our ecosystem, because our ecosystem is today fostered by the vision of the Prime Minister, in which, whatever, the corporate India, the government cannot do for the jobs, the startups as a vision should do for the jobs for the people of the country. And therefore, those people who get into entrepreneurship should not falter. Is our force multiplier for the vision of the government. So therefore, we are coming together for the same. So for the audience as well, I would like to say कि यहाँ पर a lot of people ये सोचते हैं कि यार we're just out of college and we need to start something, and you are always in a hustle of creating an entrepreneurial journey for yourself. But we have 2 examples over here who may not have had an early start into business, but when they did, पूरे अच्छे से जो कसे हुए लोग होते हैं ना, that they already know what is happening in the world, how they can become a better decision maker, a better business person. And you should take that as an example. It's not necessary कि आप right off the college or right at the age of 24, अगर आपने entrepreneurship journey start नहीं करी, then it's too late. It's never late. We have Sonal as an example. We've got Arvind sir as an example. And coming to that very important aspect, given the fact that a lot of our audiences would be in a situation कि वो India से UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं, China जा रहे हैं, Malaysia जा रहे हैं, and you mentioned that you had this patriotic feeling that I need to come back, and the best way to serve my country is through entrepreneurship. Can you just explain a little bit of
that as well. Yeah, see, basically, if you look at the changed circumstances, and I think for me it was very providential. Should I speak a bit of the stuff in Hindi, Absolutely. English, right? So that we are able जैसे ये to लोग बात talk करते हैं to the वैसे larger audience. Yeah. Absolutely. थोड़ा सा insight भी दीजिएगा कि how was it different for you when you came back, realizing how our ecosystem was different. I mean, Would have been a big hit to you as well. Since you've been all over the globe, you Yeah. work with such international clients as well. Yeah. How was the ecosystem in India different? देखिए, अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो पर कैपिटा जीडीपी इंडोनेशिया का जब मैं 96 में गया तो इंडिया से कहीं ज्यादा था। उसके बाद मैं मलेशिया में कुछ साल रहा तो पर कैपिटा जीडीपी मलेशिया का इंडिया से कम 7 से 8 गुना था। राइट, छोटा सा कंट्री लेकिन पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा था। उसके बाद मैं चाइना गया तो चाइना में जब मैं रहने लगा तो वहां का जो पर कैपिटा जीडीपी था, जो टोटल जीडीपी का साइज था, वो दैट वाज अराउंड 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। आज इंडिया का जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। पर जो मैंने रोबस्टनेस और जो फील गुड फैक्टर चाइना में देखा, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि मेरा देश में भी वैसा होना चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वाजपेयी जी उस जमाने में विजिट कर रहे थे एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन इन शंघाई। So I was, in that party which was thrown for, Mr. Vajpayee by the ambassador. तो वाजपेयी जी ने एक छोटी सी स्पीच के अंदर कहा था कि हमको बहुत दूर जाना है और हम करेंगे। और जो उन्होंने वहां की डेवलपमेंट को अप्रिशिएट किया था, वो विजुअल आज भी मेरी आंखों के सामने फ्रेश है, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास पर्सन मैं उसको फील करता था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने वाजपेयी जी को देखा कि उन्होंने हमारी बात को पढ़ा, समझा, चाइना को खुद भी उस रोबस्ट ढंग से ग्रो करते हुए अप्रिशिएट किया, और वही विजन उनका था कि हमारे देश में भी उसी तरह की तरक्की होनी चाहिए। तो ये आग जो थी, ये आग तो मेरे मन में भड़क ही रही थी बचपन से कि अगर मैं कुछ बनता हूं तो मेरे जैसे मिलियंस और हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। और वो कैसे बनेंगे? सब जगह नौकरियां थी नहीं। मैं तो फॉर्चुनेट था कि अंग्रेजी स्कूल में गया, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैंने विदेश से भी एमबीए किया, लेकिन सारे लोग तो उतने फॉर्चुनेट नहीं हो सकते। तो उनको क्या प्रोसेस में हम डालेंगे कि वो वेल्थ को क्रिएट कर सके, क्योंकि वेल्थ आप तब क्रिएट करते हैं जब आप लोकल एनवायरनमेंट के गैप्स को समझें, बिल्कुल, और आप उसके सॉल्यूशंस को लोगों को प्रोवाइड करें। जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आपने वैल्यू एडिशन की तो कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा। जब कोई आपको वैल्यू देगा तो आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। बिल्कुल, इवन बिकॉज हम मार्केटिंग बैकग्राउंड से तो वी ऑलवेज से कि जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम का या टारगेट ऑडियंस का दर्द नहीं समझेंगे तो उनकी जरूरत कैसे पूरी करेंगे और अपना सोल्यूशन कैसे क्रिएट करेंगे और उसे पोजीशन कैसे करेंगे। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन एज वेल सर कि I come from a millennial generation, 90s kids. उससे भी पहले के जो काफी सारे entrepreneurs हैं या जो generations हैं, our Indian society was always कि यार पढ़ो लिखो और नौकरी पाओ, right? What do you think has changed in this decade, and where do you think things are at this stage? एक बहुत बड़ा चेंज देखा प्रिया। चेंज ये है कि आज से 15, 20, 25 साल पहले बिजनेस करना, या तो मारवाड़ी जो हमारा समाज था, गुजराती बहुत लोग बिजनेस में थे, कुछ एक लोग पंजाबी भी थे, डाउन साउथ भी लोग हैं, ईस्ट में भी हैं, लेकिन बिजनेस करना स्कूल के अंदर एक एस्पिरेशनल चीज नहीं मानी जाती थी। तो अगर किसी को आपने चौथी क्लास में खड़ा करके पूछा कि वो क्या बनेगा, तो कोई कहेगा मैं एयरफोर्स का पायलट बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं बिजनेस क्रिएट करूंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं 1000 लोगों को नौकरी दूंगा। इस तरह की जो एस्पिरेशन है वो मिसिंग थी। And I think a lot to do with that is कि the kind of education system that we had. I mean, मैं ये देखता हूँ कि pre-British era जो main we were agriculturalists and we were traders, right? We were the center of the world. And फिर जो आई चीज हमें ये बताया गया कि आपको पढ़ना है so that we could be administrators for the British government. And that education system was still a big part of all of these generations. And I think our risk taking capacity was very limited. We were very settled in our 9 to 5 and नौकरी की उसी नौकरी में I think most लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी. But nowadays I'm so surprised to see that even if you hear like the FM,
our government schools are actually promoting and having a whole subject on entrepreneurship, and they're actually inviting a lot of entrepreneurs to come to school to actually Yeah. encourage students Yeah, to take up entrepreneurship, Yeah, which I feel is a major shift towards everybody's thought process and about Mr. Modi's startup India thought process going forward. मैं अपनी क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं उसको थोड़ा सा लेगेसी इशू के साथ में भी जोड़ के कहूंगा कि जब हमारी इसको 47 में इंडिपेंडेंस मिला, तो हमारे पास में फिनेंस अवेलेबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया जी। तो जब पब्लिक सेक्टर खड़ा किया तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया कि बीएचईएल खड़ा होगा और बीईएल खड़ा होगा और बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ा होंगी, क्योंकि इंडिविजुअल कैपिटल आने के लिए मुश्किल था। फिर हम जब नेशनलाइजेशन के पास्ट हम 80s में एंटर किए और 90s में जब लेसे फेयर ऑफ इकोनॉमी हुआ, तो उसमें कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल को फिर से एक जो ओपननेस थी उसको मदद मिलनी शुरू हुई और इम्पेटस था बजट्स के थ्रू कि प्राइवेट कैपिटल भी बड़े वे में क्रिएशन करे इंडस्ट्री की, जॉब्स की। अब वो दौर आया है जहां बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जगह एक इंडिविजुअल भी उसी तरह की कैपिटल क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, ड्रीम कर सकता है, जस्ट बिकॉज उस इंडिविजुअल को भी इम्पेटस अवेलेबल है, उसको ट्रेनिंग अवेलेबल है कि वो अपने वेंचर को खड़ा कर सके। तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशन है कि 47 से लेकर अब तक हम आज कौन से दौर में पहुंचे। सो आई वुड से आई होप दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट that the transition. So therefore, go back by let's say 15 years, 20, 30 years, to become an entrepreneur was a recipe of high risk. It was a journey into the unknown, and therefore no parent would have encouraged the kid. Conditioning was as such कि आप ये risk लो ही नहीं, आप आराम से जाओ, काम करो, नौकरी पे जाओ, 9 to 5 जाओ, and just to carry forward the same conversation, that imagine that 30, 40 years ago somebody said that I want to play more cricket, or let's say I want to become a singer. Father would say कि तेरे में talent है भाई, होगा, लेकिन कितने सिंगर्स बनेंगे? किशोर कुमार, रफी, मुकेश तो थोड़े से ही हैं। लेकिन आज वो प्लेटफॉर्म बदल गया। आज आईपीएल से जो इतनी प्राइवेट लीग्स हैं, स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म बदल गया। उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेटफॉर्म था, जो पहले बूंद के बराबर भी नहीं था, वो आज की डेट में बड़ा होता चला जा रहा है। और देयरफॉर जो यंगस्टर है जिसको इच्छा है कि वो रिस्क भी ले और वो एक सिस्टम में अपने वेंचर को क्रिएट भी करे, उसके लिए आज जैसी अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेंज। That brings to a very important question as well, because आप लोग में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बिजनेस खड़ा करना है तो एक बहुत ही यूनिक आइडिया होना चाहिए, हटके होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। Is that important, or is it important कि आप ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और उससे भी आप एक छोटा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं? What do you think about that? So प्रियश, हमने 3 हफ्ते पहले Web3 के ऊपर एक अपना सेमिनार किया, राइट? उसके अंदर 100 से ऊपर लोग थे। Web3 की बात थी, टेक्नोलॉजी की बात थी। पर अगर आप देखें कि उस टेक्निकली ओरिएंटेड सेमिनार के अंदर भी जो एप्लीकेशन ऑफ Web3 था, उसने डिस्कशन का ज्यादा हिस्सा पाया। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन हमारे किसी ना किसी सॉल्यूशन के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। तो यानी कि टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हेल्थ केयर में यूज करेंगे तो हेल्थ केयर को जानने वाला और उसको मैच करने की जरूरत है। डिफेंस में करेंगे, लीगल सिस्टम में करेंगे, राइट? लेट्स से ट्रैफिक मैनेजमेंट में करेंगे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में करेंगे। तो कहीं पर भी होगा, वो टेक्नोलॉजी उसके सॉल्यूशन को लेकर के आने के लिए जब रेलेवेंट है तो उसकी वाह वाह है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का होना तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आज की डेट में हमारे पास एनेबलर्स बहुत है ना? अभी नए बजट के अंदर 5G के सेंटर्स को ही बनाने के लिए देयर इज इम्पेटस बाय द गवर्नमेंट, that they want to
run labs run on labs, 5G, you know, 5G in labs. IITs and stuff and across the country, right? So technology recognition by the government, by the society is today a given fact. But the using of the same technology is about the people who have, you know, the pulse to recognize the gaps. Right. And therefore, I think the existence of both probably would be very relevant for the creation of a venture. Yes, I Yeah. think just understanding small gaps in the society makes all the difference. I mean, Yeah. we've had some very, very interesting startups come our way who've actually picked up very small ideas. Uh, the one that we had, Kabadi Wala, Yes. Trying to solve the problems for construction waste और उसको कैसे he was monetizing it. 19-year-old kid. 19-year-old. I mean, Yeah. that was phenomenal. Just meeting him, you know, I wasn't sure if he was in school or in college, but I think just realizing the small gaps in society can also give you a brilliant startup. Absolutely. Yeah, so, you know, Oi Kabadi Wala, you know, whatever that venture we have in our co-working space, Yeah. you go back to, you know, that kind of interaction. Go back by 30, 40 years, Kabadi Wala would come to the door to fetch our newspaper and he would be gone and dismissed in 20, 30 minutes, right? Once the transaction was over. Here, we were trying to learn from this new age entrepreneur who is, you know, addressing the same kind of a gap, but he's using technology to access a larger audience, a larger TG, consolidating his business, you know, is measuring his cash flow, is measuring, you know, how many customers he must have in a month, you know, who should be buying, what margins. So look at, you know, the kind of transformation. And I think there's a lot to learn. I remember the specific person जिसके बारे में हम बात करेंगे. It come to the office hours of Execube Exchange. Yeah, yeah. And for those of you guys who do not know what office hours is, we keep on holding. अगर आप entrepreneur हैं, आप आइए हमारे पास. जितने भी mentors हैं, they are going to be able to help you very nicely. So he had come up with this very unstructured approach Yeah. towards his business. Yeah, yeah. And the way that over the last 6 months he's been able to transform. Yeah. This person is truly, you know, he's amongst so many जो आते हैं हमारे पास, and just a grit that they have. Yeah. How essential do you think is understanding technology? You've mentioned that, but is it required कि आप MBO हो? Is it required कि आपके पास B school background हो? Is it required कि आपके पास, you know, you have that kind of educational background just to start your entrepreneurial journey? Or what is the main key ingredient that you think you've identified कि ये है तो ये आगे बढ़ जाएंगे? प्रियश, एग्जाम्पल एक और लेते हैं. आज से कुछ महीने पहले हमने एग्जीक्यूटिव एक्सचेंज में ही एक इवेंट किया था जिसमें 200 से ज्यादा लोग थे. और उसमें मैं उस दिन नहीं था, लेकिन आपने मुझे बताया था कि 12वीं पास बच्चा घर छोड़ करके स्टेशन दर स्टेशन उतरा. वहां पर उसने मार्केट रिसर्च किया ग्रोसरी स्टोर्स का और दिल्ली में आकर के बसा और छोटे से जो पैसे थे उससे शुरू करके उसने अपने बिजनेस को खड़ा किया. Created an entire retail chain by himself. तो कहने का मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें यही है कि MBA आपको हो सकता है कि HR मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस तरह के, you know, जो भी सब्जेक्ट सिखाता है. हमारे जमाने में तो वो सारी चीजें किताबों में कॉलेज जाकर के मिलती थी. अब वो बहुत सारी चीजें तो गूगल के ऊपर अवेलेबल है. जिसमें आग है, आइडिया उसको पता है, स्पेसिफिक रेलेवेंस के लिए वो उन सब्जेक्ट्स की जानकारी ले सकता है. वो हम जैसे सेंटर्स, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सेंटर्स ऐसे खुले हुए हैं, हम जैसे लोगों के पास में आ सकता है. तो मुझे आज की डेट में नहीं लगता कि जिसके पास में MBA नहीं है ना, वो जाकर के अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए एक स्ट्रिक्ट सा फॉर्मेट है ना. आइडिया का फ्रीडम, उसका फॉर्मेट की स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन जो हम जैसे लोग बता सकते हैं. तो आप अपने MBA को अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते और आप में फिर भी ख्वाब है तो मुझे लगता है कि उसको जीवंत करने का आज के जैसा मौका पहले कभी नहीं था. मतलब ज्यादा सोचे नहीं, अगर आपको प्लंज लेना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो शुरू करिए. अपने आप ही रिजल्ट्स आते रहेंगे, अपने आप ही आप चीजें सीखते रहेंगे. अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स जिनके पास आप जा सकते हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे. सो coming to the closing of this podcast as well, Sunal, I wanted to take your view.
You yourself had a late start, Yes. and probably you've worked very hard to Yes. understand this ecosystem. क्या सोच के you thought कि अब चलो, I've come up at this stage, and the previous TEDx as well, we were hearing, and you were talking about your entrepreneurial journey. Why exchange at this point of time? So, when I opened Cover, I did make a lot of mistakes. There was a lot of process of learning and unlearning. And at that point in time, I realized that all startups have similar issues when they are starting off with. We are trying to, settle our financial systems, our structures, our strategies, our 5-year plan. A lot of things are very similar for a lot of startups. And that's when I realized that if at the start of my journey, I had somebody guiding me or giving me a little bit of guidance, I maybe would not burn so many holes in my pocket like I did. And that's how the idea of exchange came about, because I felt we all could use a platform where we can help each other grow, an ecosystem where if you have an idea, you should just feel completely enabled to take it forward and not look back. Right. And that's how exchange came about. Perfect. Thank you so much. One last closing comment. I would want each one of you to recommend your favorite book on entrepreneurship, sir. What would you tell the audience to read? Well, I have a lot of favorite books, but I keep reading people, and that's my favorite subject all the time. Perfect. And anything from your side, Sonu, that you'd want to recommend? Startup 0 to 1? Startup 0 to 1. Right, perfect. So I hope आप सभी को अच्छा लगा होगा ये knowledge सुन के, and this is just the beginning, guys. We'll have experts from all across the world, mentors from the best of startups, अपनी कहानी लेके आपके पास पहुंचने के लिए, so that you are ready to take the first step. Keep tuned with us and see you in the next video. Thank you. Thank you.